Let me share the screen. ओके, लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे रिगार्डिंग सर्टेन सीरीज. अब हमें पता है सीरीज कन्वर्ज कब होती है तो डाइवर्ज कब होती है. इट्स अबाउट द कन्वर्जेंस ऑफ द और डाइवर्जेंस ऑफ द partial sums. So I'm going to sequence here. Color थोड़ा लेते हैं blue. So you have a sequence an and runs from 1 to infinity. Then with the help of the sequence, you create another sequence, the sequence of partial sums. And if this converges to some limit L, we say this is equal to summation n runs from 1 to infinity an, and we say this series converges to L. And if it doesn't, we write n runs from 1 to infinity. If it diverges, we say it is equal to infinity. In this case, of course, if it converges, we write this is less than infinity. तो पता नहीं फिर हम कहाँ कौन सी एक्सरसाइज हम कर रहे थे इसमें. तो एक एक्सरसाइज थी कि अगर हम ब्रैकेट्स डालें किसी कन्वर्जेंट सीरीज में तो उससे कुछ नहीं होता. राइट राइट. हाँ, जैसे ये था, सपोज मेरे पास कोई सीरीज है जो कन्वर्जेंट. अगर मैं ऐसा करूं, अगर मैं ऐसा, सपोज दिस सीरीज कन्वर्जेस, अगर मैं कन्वर्जेंट सीरीज में कोई ब्रैकेट्स डाल दूं बीच में, यानी मैं ऐसा करूं कि पहले यहाँ पे सम डाल दूं, फिर यहाँ से 10 टर्म्स तक, फिर बीच में प्लस, और इसको मैं मान लूं दूसरी सीरीज b1 b2 b3. तो ये जो b1 b2 b3 है, इससे अगर ये कन्वर्ज करती है तो ये जो रिजल्टिंग सीरीज है जहां मैंने कुछ टर्म्स को पहले ऐड किया अलग से, बाकियों को ऐड किया अलग से, तो फिर जो सीरीज बनेगी तो कन्वर्जेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का लिमिट सेम होगा. तो इसलिए हमने कहा था बेसिकली ये कि इफ यू हैव सबसीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड I runs from 1 to infinity. So then if I take my b1 equal to, and suppose I put summation an runs from 1 to infinity converges, अगर ऐसा है, फिर अगर मैं b1 को लेता हूँ a1 plus a2 up to an1, then b2 को लेता हूँ an plus 1 plus up to an1 an2. इसी तरह से अगर मैं ऐसे ही करता जाऊं और इन जनरल में bk को लूं ank minus 1 plus 1 plus so on and so forth ank, then ये जो सीरीज है ये भी कन्वर्ज करती है. Now it should be very simple, क्योंकि अगर मैं इसमें consider this series, मैं कर रही इजी है लेकिन मैंने किया नहीं था क्योंकि टाइम खत्म हो गया था. Consider this series Bn. Now B1, so let's consider this sequence of partial sums of. We have to show that. Now we have to show that summation Bn and runs from 1 to infinity also converges. By that I mean this. तो हमें दिखाना है इसको f तो partial sum converge करेगा. So let Tn be equal to B1 plus B2 plus so up to Bn. इसका nth partial sum. So that means what? When we nth partial sum को देखूं, T1 is equal to B1. That's equal to A1 plus A2 plus so on and so forth, An1. And that is equal to Sn1, where Sn, and let Sn be equal to A1 plus A2 so on and so forth up to An. N तक सम करूंगा तो ये मिलेगा. Of course n सब 1 तक सम करूंगा तो I will get Sn1. इसी तरह से T2 क्या होगा? होगा B1 plus B2.
और मैं इनको सम करूंगा तो a1 से a sub n2 तक आएगा, that would be a1 plus a2 plus so on and so forth up to an sub 2, but that is the same thing as n sub 2. इसी तरह से in general tn जो होगा वो होगा tk में लिखता हूँ, चलो tk होगा बराबर a1 plus a2 plus so on and so forth an sub k, which is nothing but s and k. Now let me write down. So इसके जो nth partial sums हैं नई series के, right, they form this sequence which is a subsequence of the original sequence. अब मैं ऐसे करूंगा. Now since n I runs from 1 to infinity is a subsequence of natural numbers, subsequence of 1 till natural numbers. Therefore Sn sub I runs from 1 to infinity is a subsequence. This is precisely the definition of subsequence. Subsequence of Sn n runs from 1 to infinity. And since Sn n runs from 1 to infinity converges, because our original series converges to say L, it implies that Sni अगर कोई convergent sequence है तो उसकी हर कोई subsequence I runs from 1 to infinity converges to the same limit, to L, which implies that Ti I runs from 1 to infinity converges to L, which implies that summation Bi runs from 1 to infinity. Now n लगा तो कोई doesn't, it's just a dummy, converges to same limit L. Di का मतलब जो मैंने यहाँ लिखी थी, और अगर तुम्हें यहाँ k लिखा है मैंने, वहाँ I लिखा है, उससे दिक्कत है तो नो प्रॉब्लम, n लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, as long as these sums are same. तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो k, doesn't matter. चलो k लिखते हैं, k लिखते हैं, लेकिन फिर अकॉर्डिंगली यहाँ चेंज करना, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास कोई सीरीज है, से a1 a2 plus a3 plus a4, तो अगर इस तरह से कोई सीरीज कन्वर्ज करती है, मतलब इट इज इक्वल टू सम नंबर l, तो अगर मैं ऐसे करूं, इन दो को अलग से सम करूं, इनको अलग से सम करूं, फिर टोटल करूं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन ब्रैकेट हटाने से फर्क पड़ता है, लगाने से फर्क नहीं पड़ता. जैसे फॉर एग्जांपल 1 minus 1 plus 2 minus 2 plus 3 minus 3 plus so on and so forth, ये जो है this is equal to 0. This is a convergent series because it would be 0. लेकिन अगर मैं braces हटाता हूँ, 1 minus 1 plus 2 minus 2 plus 3 minus 3, now this diverges, this does not converge. तो अगर series convergent है तो braces लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, parenthesis में डालना बीच में कुछ terms को. Okay, so this is an example कि उल्टा it's not possible. Anyway, now we come to some, let's now focus on the easiest जो हमारे पास सीरीज हैं, ऐसी सीरीज जिनकी सभी टर्म्स नॉन नेगेटिव, ठीक है ना. एंड लेट मी राइट डाउन एज अ थ्योरम. थ्योरम ये है, if summation n runs from 1 to infinity an is a series of non-negative terms, यानी कोई भी नेगेटिव टर्म नहीं है इसमें, then with of course इसका जो nth partial sum है Sn से डिनोट करेंगे a1 plus a2 plus so on and so forth up to an. Of course n is a natural number, let me write it down. Then a summation n runs from 1 to infinity an converges if this sequence of partial sums is bounded above. And
इसको चलो पहले लिखते हैं a b summation n runs from 1 to infinity an diverges if Sn is not bounded. इसका जो nth partial sum है. So it's very easy proof. Now पहले proof करते हैं a का. Now हमें ये we know that ये non-negative terms हैं, तो I can write n plus 1 is greater than equal to 0 for all n, right? So I can say now Sn plus 1 जो है that is equal to, you add the terms up to an plus a sub n plus 1. मतलब Sn का मतलब जितना इसका इंडेक्स है उतनी टर्म्स तुम ऐड करो. मैंने उतनी टर्म्स ऐड की. Now this is non-negative. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब this is bigger than equal to, इसको अगर मैं I can write this much as s sub n plus, no, this can be written, इसको पहले लिख देते हैं. This can be written as Sn plus an plus 1. तो चूंकि non-negative है, so this is bigger than equal to Sn. Now this is true for all n. क्योंकि non-negative term है, तो obviously S1 किसके बराबर है? It's A1. तो S2 क्या है? A1 plus A2. मैंने नॉन नेगेटिव चीज ऐड की है, तो ये बड़ा ही होगा. You should have S1 less than equal to S2 less than equal to S3. वही मैंने लिखा. Therefore Sn is less than equal to Sn plus 1 for all n, which implies that Sn, n runs from 1 to infinity, is a monotonic increasing sequence. Monotonic increasing sequence. और हमें पता है monotonic increasing sequence के साथ क्या होता है. If it is bounded above, it converges. If it is not bounded above, it does not converge. And since Sn is given is bounded, therefore, of course, means that Sn converges. Actually, it converges to its least upper bound. अगर वो कन्वर्ज करती है, तो उसी का मतलब है कि सीरीज जो है वो कन्वर्ज करती है. अब B का भी ऐसे ही है. Now, if Sn is unbounded, is not bounded above, bounded above, so it implies that Sn diverges to infinity, which means the series diverges. तो अब हमें पता चला अगर कोई नॉन नेगेटिव टर्म्स की सीरीज है. ये चैट में क्या है? सर कुछ लॉन्ग वेटिंग रूम क्या है? मैंने अलाउ किया है वैसे सबको. Okay. Anyway, so this is what I have now. The important result, अगर कोई नॉन नेगेटिव टर्म्स की सीरीज है, अगर उसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स बाउंडेड है, तो वो कन्वर्ज करेगी. नाउ इससे हम ये साबित कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस हियर लूं, लेकिन मैं चाहूंगा तुम ये खुद करो. लेट्स टेक इट एज अ होम असाइनमेंट यूजिंग जो मैंने अभी कहा वही मैं यूज करूंगा. नाउ a अगर 0 is less than, अगर x less than 1 है, if this is true, then this series, the geometric series, then summation n runs from 0 to infinity xn converges to 1 by 1 minus x b. But if x is bigger than or equal to 1, then the geometric series n runs from 0 to infinity xn diverges. अब यही है, ये नॉन नेगेटिव टर्म्स हैं, और अगर ये बाउंडेड है, अगर 0 is x is less than 1, we know that ये इसका x raised to power n है, ये भी less than 1 होगा. क्योंकि अगर कोई नंबर less than 1 है, जितना उसका पावर बढ़ेगा वो और कम होगा. So in general, अगर ये मेरा an है, so it is bounded above. Furthermore, नहीं मैंने गलत लिखा, गलत.
जब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था, अगर मैं इसका nth पार्शियल सम लूं तो पहले तो ये नॉन डिग्री मतलब पॉजिटिव टर्म्स हैं सारी की सारी, 1 बिकॉज x इज पॉजिटिव, x स्क्वायर, ये सारे के सारी पॉजिटिव टर्म्स हैं. दिस इज माय a1, दिस इज माय a2, दिस इज माय a3. लेकिन अगर मैं अब लूं Sn को, I have to show that it's bounded above by above cell. That's very easy. Well, that is equal to 1 plus x square plus so on and so forth, x raised to power n minus 1. And since it is a geometric series, so this is actually equal to 1 minus x raised to power n plus 1. मैंने क्या दिया? Sn को मैंने दिया नहीं, xn ही होना चाहिए. Right, divided by 1 minus x. But that is equal to 1 by 1 minus x minus x raised to power n divided by 1 minus x. अब देखो ये पॉजिटिव है, ये सारा पॉजिटिव, तो this is less than 1 by 1 minus x or x, so it's bounded, it's independent of n. So the sequence of partial sums is bounded above by this number, so therefore it would converge. और यहाँ तो of course it's not bounded if x is bigger than 1, तो ये तुम कर सकते हो, क्योंकि अगर x bigger than 1 है, उसको जितनी बार हम मल्टीप्लाई करेंगे, पावर चढ़ाते जाएंगे, वो बड़ा होता जाएगा. Anyway, so इसको हम यहीं पे छोड़ते हैं. Right. So now we come to, अब क्या करें, हम alternating series में जाएं या मेरे पास दो रास्ते हैं जाने के. Okay, now let's come to this alternating series. मतलब ये तो हुआ sequence of positive terms. अब positive terms पर और भी कर सकते हैं, but let's for a moment हम जाते हैं series of this type. 1 minus 1 by 2 plus 1 by 3 minus इस टाइप की अगर कोई सीरीज की टर्म्स जो है वो ऑल्टरनेट कर रही है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, नेगेटिव. नाउ वी नो दैट, जैसे फॉर एग्जांपल इसी सीरीज को ले लो, अगर ये होता 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 4, हम प्रूव कर चुके हैं दैट दिस इज इक्वल टू इंफिनिटी. इट इज द फेमस हार्मोनिक सीरीज. We know that, but अगर ये बीच में subtract और addition होते जाएं, then what can we say? Does it converge or diverge? या in general हम alternating series के बारे में कुछ कह सकते हैं? So let's do this theorem on alternating series. कभी-कभी हम इसको Leibniz test भी कहते हैं. So let me write this as Leibniz test. So it says that if you have a sequence n runs from 1 to infinity, is a sequence of non-negative terms, yeah, positive terms, of positive terms. Let me write it like this, such that दो conditions. एक, it is monotonic decreasing, यानी a1 is bigger than equal to a2 is bigger than, कम हो रहा है with the increasing index. यानी अगर ऐसा है, चाहे तो यहाँ मैं लिख दूं, that is an is a monotonic decreasing sequence of positive terms. an is monotonic decreasing. दूसरा, it approaches 0 in the limit. At limit n approaches infinity, an is equal to 0. Then the alternating series generate होती है, हमारे कहने का मतलब है, then the alternating series जो है summation -1 raised to power n plus 1 n runs from 1 to infinity. मतलब ये कौन सी सीरीज है, तुम देख सकते हो, n को 1 देंगे तो it should be a1 minus a2 plus a3, मतलब it alternates between the signs. तो इस टाइप की सीरीज it converges, is convergent. तो ये alternating सीरीज में बहुत ही important रिजल्ट है, बहुत कम होता है. So let's prove it. मतलब प्रूफ करना
प्रूव करना उतना मुश्किल नहीं इसको फ्रैक्चर स्पीकिंग। तो ऑब्वियसली हम पार्शियल सम्स की बात करेंगे, राइट? नाउ consider first the partial sums with odd index. मेरे कहने का मतलब है हम फोकस करेंगे पहले, तो याद है कि पार्शियल सम का मतलब है ये, इन दिस केस इट वुड बी a1 minus a2 plus a3 minus a4, तो इसी तरह से जाता जाएगा जहां तक हम जाना चाहें। तो s1 क्या होगा, s1 would be a1, what would be s2, that would be a1 minus a2, what would be s3, that would be a1 minus a2 plus a3, इसी तरह से s4 क्या होगा, a1 minus a2 plus a3 minus a4, इसी तरह से इसके पार्शियल सम्स। तो हम पहले इन पे फोकस करेंगे विद ऑड इंडेक्स, यानी आई कैन सी दैट अगर मैं s3 को देखूं, s3 किसके बराबर है, s3 is equal to a1 minus a2 plus a3, right? But this is not, a1 is the same as s1, so this is s1 minus a2 plus a3, right? Now what we see, ये जो ये टर्म है यहाँ पे, now ये कम हो रहा है ना, यानी ये नंबर जो है ये नेगेटिव होगा क्योंकि a2 a3 से छोटा है, जो हमारी है ना कि it is a monotonic decreasing sequence of positive terms, so that means ये जो नंबर है ये नेगेटिव है, ये इसको कम कर रहा है, so this is less than equal to s, right? Because a3 is less than a2, that means a3 minus a2 is negative. तो नेगेटिव टर्म ऐड करने से जो टर्म होगी वो कम ही होगी, यानी s3 को हमने एक नेगेटिव चीज ऐड की है s1 से, तो s1 को एक नेगेटिव चीज ऐड की है तो हमें s3 मिलता है, तो इसका मतलब वो छोटा ही हुआ होगा, यानी s3 would be less than equal to s4. Similarly अगर मैं s5 या अब इन जनरल और एंड इन जनरल अगर मैं लूँ, चलो जनरल ऑड्स इंडेक्स हम लिखते हैं यूजुअली s2 raised to power n minus 1, वो बराबर होगा a1 minus a2 plus a3, right? हम और तक जा रहे हैं हमें, so it would be minus plus, इसी तरह से फिर आएगा minus a to n, right? then आएगा plus a to n plus 1, मैंने 2n minus 1 लिखा, plus 1 कर देते हैं, right? so और इससे पहले यहाँ पे होगा इसको a to n minus 1, इसका इंडेक्स बढ़ता है ना, मतलब पहले 1 2 3 फिर 2n minus 1 फिर 2n फिर 2n plus 1, अब हमें पता है जो ऑड वाले हैं वो पॉजिटिव है और इवन वाले नेगेटिव है, उस बेसिस पे मैं लिख सकता हूँ इसको, यहां से यहां तक इट इज द सम s to n minus 1, राइट? फिर है प्लस a to n plus 1 minus a to n, again this is negative, so this would be less than or equal to s to n minus 1, because again s to n plus 1 is less than equal to a to n plus 1 is less than equal to a to n, because the sequence is monotonic decreasing. So अगर मैं इसकी सब सीक्वेंस लेता हूँ ऑड सम्स की, यानी अगर मैं इसको कंसिडर करूँ, इसकी एक सब सीक्वेंस है s5, तो इट इज एक्चुअली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, है ना, क्योंकि s3 s1 से be like s1 is bigger than equal to s3 is bigger than equal to s5, in general s2n minus 1 is bigger than equal to s2n plus 1, right? That is s2n, यहाँ मैं लिख देता हूँ, for all n belonging to the set of natural numbers, which means that s to n minus 1 है, n runs from 1 to infinity, is a monotonic decreasing sequence, right?
और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है एंड ऑल्सो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है एंड ऑल्सो s sub 2n minus 1 जो है s sub 2n minus 1 is equal to a1 minus a2 plus a3 minus a4 then plus minus ऐसे ही होता जाएगा until I reach plus ऐसा a2n minus 3 minus a2n minus 2 फिर आ जाएगा एक बढ़ता जाएगा plus a2n minus 1 a2n minus 1 तक जाना है. Now I can write them as a1 minus a2 plus a3 minus a4 plus so on and so forth. इनको मैं दो ग्रुप्स में डाल दूंगा एंड इसको अलग से रखूंगा 2n minus 1. अब क्या हुआ इससे ये हुआ कि ये जो ईच टर्म यहाँ पे है देखो ये टर्म कम हो रही है यानी a1 इज बिगर देन a2 a3 इज बिगर देन a4 यानी अगर ये इससे बड़ा है तो ये जो नंबर है पैरेंथेसिस में सारे ये नॉन नेगेटिव है नॉन नेगेटिव है नॉन नेगेटिव है ये भी नॉन नेगेटिव है. ठीक है तो इसका मतलब now each term now since या लिख देते हैं since an जो सीक्वेंस है खुद is monotonic decreasing therefore each term in the parenthesis on the right hand side is non-negative. Okay, and of course a2n minus 1 be non-negative, so I'm adding non-negative terms, so sum should be also non-negative. Therefore s2n minus 1 is greater than or equal to 0 for all n belonging to the set of natural numbers. Right, so therefore पहले ही मैं कर चुका हूँ s2n minus 1 is a monotonic decreasing sequence bounded below. तो क्योंकि it is bounded below by 0, सब 0 से बड़े हैं, hence it must converge to its GLB, greatest level bound, say L. तो ये L को कन्वर्ज करना चाहिए, यानी I should have limit s to n minus 1 n approaches infinity should be equal to L, and of course L is the GLB of s minus 1. It is the lower bound in the first place, यानी ऐसा होना चाहिए हमें. ये मैं ऐसे ही आगे यूज करूंगा, तो अभी के लिए इसको ऐसे ही रखते हैं. Okay, so let's focus on now क्या बोलते हैं, we focus on the even index. Now consider the partial sums with even index. अगर even index है, से मतलब मेरे कहने का मतलब है इनको मैं लेता हूँ. Okay, so then s2 किसके बराबर है? It is a1 minus e2. s3 s4 किसके बराबर है? It is a1 minus e2 plus a3 minus a4. इसी तरह से in general s2n बराबर होगा a minus a2 plus so on and so forth plus a2n minus 1 plus a2n. So that would be the nth partial sum. Now let me consider this s2n plus 2 जो ना next वाली term आएगी, दो ऐड करके, क्योंकि मैं दो ऐड कर रहा हूँ, तो वो होगी a1 plus minus a2 plus so on and so forth plus a2n minus 1 plus a2n, उसके बाद क्या आएगा plus a2 minus
a2n plus 1 plus, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा, हाँ गलत लिखा, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। ओके, जरा ध्यान से देखो क्या हो रहा है। यहां से यहां तक तो ये खैर है s2n, देन आई हैव प्लस a2n plus 1 minus a2n plus 2 plus 2, ठीक है। सो अब अगर ये टर्म में देखूं, now this is, ये छोटा है ये बड़ा है, so this is नेगेटिव टर्म। तो अगर मैं नेगेटिव टर्म ऐड कर रहा हूं, इसका मतलब दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू s2n, राइट? नहीं नहीं, गलत गलत गलत, ये कम हो रही है तो ये छोटा है, तो सिंस an यहाँ पे लिख सकते हैं is monotonic decreasing होने का मतलब ये हुआ कि a2n plus 2 it must be less than equal to a2n plus 1, which means that a2n plus 1 minus a2n plus 2 must be non-negative. तो यहाँ पे this must be bigger than or equal to s2n, right? So in general, so that is, I get s2n is less than or equal to s2n plus 2 for all n belong to the set of natural numbers. So what does that mean? It implies that ये जो sequence है s sub 2n, जो कि एक subsequence है of the original partial sums of the original series, is monotonic increasing. Monotonic increasing, and of course s2n जो है, you can also write it as a1 minus a2 plus a3, इसी तरह से जाते जाते minus a4 plus so on and so forth plus, मेरा यहाँ पर क्या लिखूं, plus a2n minus 1 minus a sub 2n, but you can write it as a1 minus a2 minus a3 minus a4 minus a5, इसी तरह से करते करते I should have what a माइनस को बाहर निकालेंगे, a2n minus 2 minus a2n minus 1, then I should have minus a2n. Okay. Now अब अगर मैं ये टर्म जो देखूं ब्रेसेस में, ये पॉजिटिव होंगी क्योंकि ये a3 a2 से छोटा है, a5 a4 से छोटा है, ये इससे छोटा है, तो इसका मतलब ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नहीं, सॉरी मुझे उल्टा कर रहा हूँ, ये इससे छोटा है तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो अगर ये पॉजिटिव नंबर्स को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो ये नंबर छोटे हो रहे हैं, यानी दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू a1 फॉर ऑल n, राइट? तो सिंस ऑल द टर्म्स इन द parentheses are positive and this is also positive and I'm subtracting positive terms, so therefore it must be smaller than what I have before subtraction. I have what a1, that's what I had before subtraction. So it implies that ये तो कोई fixed number होगा, तो s2n is bounded above. Which means that this is monotonically increasing, bounded above. So therefore s2n, n runs from 1 to infinity, must converge to its least upper bound, say m. Say m. That's capital M. So that is, I should have limit n approaches infinity, s2n should be equal to n. तो अब हमने देखा कि ये दोनों सब सीक्वेंसेस की कन्वर्ज करती हैं, अगर मैं ऑड इंडेक्स वाली टर्म दूं या इवन इंडेक्स वाली टर्म. Now I can write s2n minus s2n sub minus 1, it's just a2n. Now
Now limit n approaches infinity, s to n minus s to n minus 1 is equal to limit n approaches infinity, a to n, but that should be 0 because it is given that limit n approaches infinity, a n is equal to 0. So it as n approaches infinity, to n also approaches infinity, so this has to be 0, which implies that क्योंकि अगर ये तो converge करती है, means limit n approaches s to n minus limit n approaches infinity, s to n minus 1 is equal to 0, which means that L minus M is equal to 0, which means L is equal to M. यानी इन दोनों का limit same है. So therefore, what I have, I've got two sequences, two subsequences, S to N runs from 1 to infinity, and S to N minus 1, N runs from 1 to infinity, both converge to the same limit. Okay, so they converge to the same limit, and one is monotonic increasing, other one is monotonic decreasing. What should you have? So you should have something like this. Now, since L is the least upper bound, greatest lower bound of S to N minus 1, it means that, and L is also M, which is equal to L, is the LUP of S to N. It implies that, what does it imply? S to N should be less than or equal to L, which should be less than or equal to S to N minus 1 for all N. Right? So, what does that mean? It implies that 0 is less than or equal to S to N minus L. इसको मैं यहाँ लाऊंगा तो नॉन नेगेटिव होगा क्योंकि ये बड़ा है. For all L, which is less than or equal to S to N minus 1 minus S to N. Why? Because S to N is less than or equal to L, so minus L. मैं क्या किया? ठीक है. ओके ओके, तुम फिर से ज्वाइन करना, ये खत्म होने वाला है. इट्स लेस देन अ मिनट, क्योंकि अभी ये पूरा तो नहीं होगा, इसलिए हम इसको पूरा करेंगे. ओके, मैं काटता हूँ, तुम फिर से ज्वाइन करना. आर यू लिसनिंग?